Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the course Sampling Design and Analysis MTH494 and lecture number 15. Almost हम अपने कोर्स के मिड तक इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं एंड आई होप कि अभी तक हमने जितना भी कोर्स कवर किया है उसमें आपकी आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, बिकॉज ये कोर्स कभी भी फर्स्ट टाइम पढ़ने से तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती. यू विल हैव टू रिपीट इट. ओके, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा एंड इंशाल्लाह इन योर कोर्स आउटलाइंस यू विल फाइंड सम ऑफ द रेफरेंस बुक्स ओवर देयर सो दैट कि आपको इसकी पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो सके. सो फार हम अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात की, उसके बाद हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात की एंड आफ्टर दैट वी रियलाइज दैट कि जी हर सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो एक अप्रोच जो कि हम पढ़ रहे थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, वो सफिशिएंट और एफिशिएंट रिजल्ट्स नहीं देती और उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स हैं. हमने वो सारी लॉजिक्स को, वो सारे सिनेरियोज को एड्रेस करने की कोशिश की. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, एंड नाउ वी आर ऑन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. एक चीज आपके जहन में रहे, व्हेनेवर वी आर सेइंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी. व्हेनेवर जब कभी भी हम अपने पास बात करते हैं रैंडम की, इसका मतलब ये होता है, इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी, right? So we talked about simple random sampling and now we are working on the stratified random sampling and we are having huge varieties. और यहाँ बेसिकली जो आपके कोर्स का मकसद है दैट इज सैम्पलिंग डिजाइन. सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वाज अ डिजाइन एंड यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये भी एक आपका सैम्पलिंग डिजाइन है. देन हम साथ साथ उसका एनालिसिस भी करते जा रहे हैं. सो हमारे पास जो कोर्स की टिपिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी करते जा रहे हैं. हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं और हमने उन सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है. सो फार हम एज वेल एज आई थिंक, ओके, जरूरी नहीं कि आप मेरी थिंकिंग से एग्री करें, हम अपने पर्पस में पूरी तरह ठीक, मतलब वी आर ऑन ट्रैक. ओके, बिकॉज आपको मैंने पहले भी बताया था कि दो अप्रोचेज हैं. या तो हम इसको बिल्कुल प्योर कोर्स बना दें जिसमें हम इनके थ्योरम्स और जो भी इसकी वो क्या कहते हैं बैक एंड प्रोग्रामिंग है, दैट हाउ टू प्रूव द थ्योरम्स, हाउ टू प्रूव द रिजल्ट्स, हाउ टू प्रूव ऑल द फॉर्मूलाए फॉर द सैम्पल साइजेस और इंटरवल्स और एनीथिंग. रादर आई थॉट इट वुड बी गुड कि हम अगर एक चीज़ को डिस्कस करें, उसकी वहाँ पे जिसकी अफादियत है और जो उसकी यूनिकनेस है उसको हम डिस्कस करें और उसके बाद हम उसके ऊपर एक रियल लाइफ जो है वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें. सो हम अपनी इसी अप्रोच के ऊपर इंशाल्लाह टिल लेक्चर 29 और 28, आई डोंट नो बिकॉज अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर 28 तक शायद हम ऐसे ही चलें. फिर आखिरी कुछ 2 लेक्चर्स में हमारी कोशिश होगी कि कुछ जो आपके थ्योरम्स हैं उनको प्रूव कर लिया जाए एंड इन लास्ट 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह वी विल रिपीट होल ऑफ द कोर्स फॉर यू गाइज. ओके, सो हियर कम्स योर लेक्चर नंबर 15. बट व्हाट इज दिस? Well, this is some sort of lecture number 14, some portion of lecture number 14. In fact, that is a review session जिसके अंदर हम 5 to 10 मिनट्स लगाएंगे so that कि हम जरा अपने आज के लेक्चर को लिंक अप कर सकें with this. So हमने अपने लास्ट सेशन में ये देखा कि how to draw a stratified random sample. So we talked about is that we should specify the strata वेरी क्लियरली, नीट एंड क्लीन फॉर्म में. हमें ये पता होना चाहिए कि जी आपके कौन कौन से हम कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्ट्रैटा होंगे, राइट? आपको जितने भी स्ट्रैटा होते हैं वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं. और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि जब हम अपने सैम्पलिंग यूनिट्स को प्लेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्ट्रैटा तो हमारे पास वो आसानी हो जाती है. अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? दैट उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता. हर स्ट्रैटा जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, बट इनसाइड द स्ट्रैटा वी फाइंड होमोजेनिटी एंड ऑलवेज वी फाइंड दैट. ओके, बट ये बहरहाल एक मुश्किल तरीका ज़रूर है इन अ वे दैट कि पूरी पॉपुलेशन में से ये कैसे किया जाए कि जोन से एलिमेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट स्ट्रैटा से बिलोंग करेंगे एंड देन वी हैव टू प्लेस ऑल ऑफ देम इनटू देयर अप्रोप्रिएट स्ट्रैटम. ओके, आफ्टर द सैंपल यूनिट आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रैटा वी सिलेक्ट सिंपल रैंडम सैंपल बट और any other technique as well, any useful, any required technique जो भी वहाँ पे prefer की जा सकती है, we can use that from each stratum by using the techniques discussed in last unit, जो कि हम इससे पहले उनके ऊपर बात कर चुके हैं.
देन हमने यहाँ पे कुछ नोटेशंस देखी कि जब भी हम यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर होंगे तो L दैट इज अ नंबर ऑफ स्ट्रेटा और ऑब्वियसली हमारे पास एंड लिमिट वही होती है. देन NH हमने बात की थी कि सैम्पलिंग यूनिट्स इन द स्ट्रेटम I एंड N या बेसिकली टोटल नंबर ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स इन होल पॉपुलेशन दैट इज N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस अप टिल NL, राइट. देन हमने बात की थी कि हमें ऑब्वियसली देखें जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज कर रहे हैं या स्ट्रैटिफाइड को यूज कर रहे हैं या सिस्टमैटिक को यूज कर रहे हैं या रेशियो एनालिसिस को यूज कर रहे हैं या हम रेग्रेशन एनालिसिस को यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमने पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है. अब वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स कौन से हो सकते हैं? सो फार हमने अभी तक देखे हैं, हमने पॉपुलेशन मीन को देखा है, पॉपुलेशन टोटल को देखा है, हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को देखा है, राइट. एंड एट द सेम टाइम हमने ना सिर्फ ये कि इनको एस्टिमेट करके देखा है बल्कि हमने ये भी देखा है कि हाउ टू पुट हम कहते हैं बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन, कि ठीक है हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल वी शुड नो दैट कि बाउंड एरर हमारे पास कहां तक हो सकता है. सो जो बाउंड हमें मिलता है एरर हमेशा उससे लेस होता है एंड वी आर ऑलवेज हाईली कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. How can we use the data from a stratified random sample to estimate the population mean? Let y bar denote the sample mean for a simple random sample. याद रखिएगा ये simple random sample का था जो कि हमने already कर चुके हैं from stratum I. ऑब्वियस सी बात है जब हम ये कह रहे हैं कि हमने अपने डेटा को यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राटा में डिवाइड कर दिया हुआ है, तो हर स्ट्राटा में से अगर मैं SRS को ही यूज करता हूं तो जो अगर मैं इंडिविजुअल किसी एक स्ट्राटम का मीन निकालूंगा by using simple random sampling, so that is going to be yi bar, okay. And the sample size for stratum I, mu the population mean for stratum I, and tau I the population total for stratum I. Then the population total tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus up till tau L, right. यहाँ पे एक some sort of the stuff is missing, okay. So we have simple random sample within each stratum, right. Therefore we know that yi bar is an unbiased estimator of mu I, clear, and nyi bar is an unbiased estimator of the stratum total, that is tau I is equal to ni into mu I. ये हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में देख चुके हैं, राइट. ओके, देन हमने यहाँ पे कुछ एस्टिमेटर्स को डिस्कस किया और वो एस्टिमेटर्स अभी हम पहले पॉपुलेशन मीन की बात कर लेते हैं. सो वी हैड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू, दैट इज y bar st is equal to 1 by n into n1 y1 bar plus n2 y2 bar plus nl yl bar, एंड हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2.1. एट द सेम टाइम फिर हमने वहाँ पे एस्टिमेटेड वेरिएंस भी देख लिया y bar st का, एंड वी प्रूव दैट एंड वी नेम्ड इट एज एन इक्वेशन नंबर 2.2. देन हमने इसका बाउंड ऑन द एरर भी देख लिया. तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक दफा वेरिएंस आ गया देन आई कैन इजीली फाइंड, वेल देयर इज अ लिटिल मिस्टेक, आई थिंक आई शुड फिक्स इट हियर. ओके, सो हियर इट शुड बी अ वेरिएंस, राइट. देन we had the procedure for estimation of the population total tau, and that procedure is basically same as like when we are estimating mu, since tau is equal to n mu and unbiased estimator of tau is given by ny bar st. So हमने यहाँ पे उनके भी एस्टिमेटर्स को डिफाइन किया एंड हमने ny bar st के को यूज करते हुए we have calculated this value and then we had estimated variance. जब यहाँ वेरिएंस निकाल रहे हैं दैट इज फाइन, बट जब भी हम यहाँ पे बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन निकालते हैं देन इट शुड बी टू वेरिएंस, यहाँ पे एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ y bar st, एंड सिंपली हमने यहाँ पे इस वेरिएंस की वैल्यू पुट कर दी एंड वी गॉट इट. ओके, देन अगर हमारे पास बाउंड को डिफाइन कर दिया जाए, ये बता दिया जाए कि हम अपनी रिसर्च में एरर को इस एक पर्टिकुलर लेवल से आगे पीछे मूव नहीं करना चाहते, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम किसी और चीज को नहीं छेड़ सकते, हम सिर्फ सैंपल साइज को देख सकते हैं. ओके फाइन, आप कितना सैंपल साइज लो कि आपका जो वहां पे बाउंड ऑन द एरर है, एरर बेसिकली एस्टिमेशन के लिए होगा, सो बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन वो आपका सेटिस्फाई किया जा सके. सो हमने उसके लिए पूरे के पूरे प्रोसीजर को स्टडी किया एंड देन हमने इसके बारे में, यहाँ पे एक चीज और थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, दैट इज फॉर लार्ज एन द एक्चुअल वेरिएंस, दैट इज वेरिएंस ऑफ y bar st looks very similar
to the estimated variance of the y bar st with s1 square s2 square is replaced, because अगर आपको population variances जो कि आम तौर पे known नहीं होते उनको हम sample variances के साथ replace कर देते हैं. Although we set variance of y bar st equal to b square by 4, we cannot solve for n unless we know something about the relationship among all n's, yani size of each stratum and the whole n. So there are many ways of allocating the whole n, basically जो आपका sample size है, among the various strata. So in each case, however, the number of observations ni allocated to the ith stratum is some fraction of the total sample साइज n. ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ये कह दिया पूरी स्टडी के अंदर कि मैंने 100 का सैंपल लेना है और आपने वहाँ पे उसके अंदर से हम कहते हैं 4 आपने वहाँ स्ट्रैटा डिज़ाइन कर लिए हैं, तो ये एलोकेशन कि कौन से स्ट्रैटम से कितना साइज दिया जाएगा वो बेसिकली आपके n1 n2 अप टिल nl हो जाएंगे और वो सारे सैंपल साइजेज जो हैं वो आपका मिलके यहाँ पर कैपिटल N डिज़ाइन करेंगे. देन हमने इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट उसके फार्मूले डिराइव किए एंड देन वी हैड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सैंपल साइज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट म्यू और टॉ विद अ बाउंड b ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन. हमने उसके लिए ये n का फार्मूला भी डिराइव किया एंड हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2.8. लेकिन यहाँ पे एक चीज जो कि गौर करने वाली थी, जो आपका ये वाला d मौजूद है n स्क्वायर d, दिस d इज डिफरेंट for mu and tau. So whenever you are estimating mu, that d is equal to b square by 4, and if you are estimating tau, that is b square by 4n square, right? So हमने यहाँ पे कुछ important बातें देखी थी और एक question लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें छोड़ दिया था कि what is the role of range in your data, right? सो रेंज का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी छोड़ा था, लेकिन आज होपफुली हम अपनी किसी एग्जांपल में इसको जरूर डिस्कस करेंगे. वी मस्ट ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंसेस, दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर अप टिल सिग्मा l स्क्वायर, बिफोर वी कैन यूज द इक्वेशन 2.8, दैट इक्वेशन जो कि अभी हमने यहाँ पे डिराइव की है. सो वी मस्ट ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंसेस. ये पॉपुलेशन वेरिएंसेस हमेशा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होते हैं. ओके, हमें किसी न किसी तरीके से जरूर एस्टिमेट करना होता है. सो उसका एक मेथड तो ये है कि हम उसको सैंपल वेरिएंसेस के साथ अप्रॉक्सीमेट कर लें. दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पे ये है कि हम रेंज को यूज कर लें. और यहाँ पे हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखी थी कि रेंज शुड रफली बी 4 to 6 स्टैंडर्ड डिविएशन. और मैंने इस वक्त भी कहा था कि अभी मैं इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा अनटिल अनलेस वी आर हैविंग सम रियल प्रॉब्लम. ओके, सो एलोकेशन हम कैसे करते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैंपल सर्वे डिजाइन इज टू प्रोवाइड एस्टिमेटर विद स्मॉल वेरिएंसेस at the lowest possible cost. Now we have introduced a new factor here. Cost factor भी हमारे पास आ जाता है. So far अभी तक हमने इसको देखा नहीं था. हमने अपने यहाँ पर जितने भी हमने इसके रूल डिफाइन किए, हमने कहीं पर भी आपको यहाँ पे कहीं पर भी कॉस्ट नजर नहीं आएगी, C नजर नहीं आएगा, बट यहाँ पर हमने एक नया फैक्टर दैट इज अ कॉस्ट, इसको हम पिक्चर में ले आए हैं. आफ्टर द सैंपल साइज n is chosen, there are many ways to divide n into the individual stratum sample size n1 up till nl. Each division may result in a different variance for the sample mean. Obvious सी बात है, ये आप पास यहाँ पे टोटल n है, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे among different strata, so obviously आपको different variances यहाँ पे देगा. So we can say that our objective is to use an allocation that gives a specified amount of information at minimum cost. तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहे. बेस्ट एलोकेशन स्कीम इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स. हमने तीनों फैक्टर्स देखे थे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक फैक्टर था, देन हर एक स्ट्रैटम के अंदर कितनी वेरिएशन मौजूद है, राइट? हाई वेरिएशन ऑब्वियसली कभी भी फेवरेबल नहीं होती. देन कॉस्ट इशू, राइट? तो आपके बेसिकली वो स्ट्रैटा जो आपके पास बाद स्ट्रैटा ऐसे होते हैं जहां पर आपको कॉस्ट का फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है. सो हमारे पास कोशिश ये होती है कि हम ऐसे स्ट्रैटा पिक करें जहां पे कॉस्ट आपके पास मिनिमम रहे. देन हमने अप्रॉक्सीमेट एलोकेशन दैट मिनिमाइजेस कॉस्ट. अब हम कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ चल रहे हैं. फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएंस, अगर आप यहाँ पे वेरिएंस को फिक्स कर लेते हैं तो उसके अंदर अगर हम रह के ये देखें कि हमारे पास सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकती है, या
हम ये कर सकते हैं कि अगर कॉस्ट को फिक्स कर दिया जाए और ये देखा जाए कि हाउ टू मिनिमाइज द वेरिएंस, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. ओके, ये चीज वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन. सो वी हैव दैट फार्मूला NI, और हमने इसके लिए यहाँ पे सारी इक्वेशन को नाम दिया, दैट इज 2.9. और although we have already worked and discussed this. Okay, हमने इसके ऊपर शायद कोई प्रॉब्लम भी लास्ट सेशन में सॉल्व किया था. इन अबव फार्मूला NI डिनोट्स द साइज ऑफ द ith स्ट्रेटम, एंड इस तरीके से आपके पास वेरिएंसेस हैं. एंड C जो है बेसिकली यहाँ पे वो हर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटम से वहाँ पे किसी ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं पिक करने का या ऑब्टेन करने का जो कॉस्ट हमें पड़ती है, दैट इज बेसिकली CI. One must approximate the variance of each stratum. Again, variance is in picture. Okay, one must approximate the variance of each stratum before sampling in order to use the allocation formula discussed in last slide. The approximation can be obtained from earlier surveys or from knowledge of the range of the measurement within each stratum. So हमने इसके बाद इसकी एक और वैरायटी n की देखी थी, राइट, जिसमें हमने उस फॉर्मूले के अंदर NI by n की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया. So we got the final n, that is 2.10 for optimal allocation with the variance y bar st fixed at D. Now here comes a new technique, here comes a new approach, that is a Neyman's allocations, right? Basically हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. You can say that is the start of lecture 15, right? यहाँ से हमारे आज का सेशन जो है वो स्टार्ट होगा. In some stratified sampling problems, the cost of obtaining an observation is the same for all strata. Well, हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है और होते भी हैं जहाँ पे हर एक हम कहते हैं स्ट्रेटम से किसी भी आइटम को पिक करने का या वहाँ से उठाने का, वहाँ से सिलेक्शन का जो कॉस्ट है वो सेम होती है सारे के सारे स्ट्रेटा की. If costs are unknown, we may be willing to assume that cost per observation are equal. हाँ, अगर आपको कॉस्ट नहीं पता तो फिर उसका हल निकालने के लिए हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो इक्वल है. If C1 is equal to C2 is equal to CL, then the cost term cancel in equation 2.9 and becomes, in fact इस equation की बात हो रही है 2.9 की, कि इसके अंदर आपकी जो कॉस्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी. सो अल्टीमेटली हमारे पास रह क्या जाएगा, वी विल बी हैविंग अ न्यू इक्वेशन दैट इज बेसिकली NI which is equal to NI sigma I divided some I varies from 1 to L, and this is NI sigma I. So we can call it as equation number 2.11. The method of selecting N1, N2 up to NL is called a Neyman allocation. Under this allocation, equation 2.10 for the total sample size N, that basically becomes N is equal to sum I varies from 1 to L NI sigma I whole square and divided by N square D plus sum I varies from 1 to L and NI sigma I square, and we can call it and we can name this equation as 2.12, right? So here comes an example in which we will see that how it does work. Okay, so that is example number 2.8. Let us read this first. The advertising firm decides to use a telephone interviews rather than person interview because all households in the country have telephone, and this method reduce cost. ऑब्वियसली बात है, अगर आप खुद जाके 1 by 1 वहाँ पे जाके लोगों से इंटरव्यू करेंगे आपको वो कॉस्ट करेगा. और अगर हमारे पास वहाँ पे कोई लीगल पॉलिसी ऐसी है कि हमें ये पता हो कि पूरे काउंटी के अंदर हर शख्स के पास हर घर में एक फ़ोन लगा हुआ है, so the cost of obtaining an observation is then the same in all three strata.
ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक शहर में से इफ यू आर इन इस्लामाबाद एंड यू आर कंडक्टिंग योर रिसर्च इन इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के अंदर आपकी लोकल कॉल जो है वो आपको सेम एक ही रेट पे कॉस्ट करती है अगर आप वहाँ पे लैंडलाइन पे कॉल करते हैं। सो अब क्या होगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट यही सिचुएशन है कि अगर पूरी काउंटी के अंदर हर घर में फ़ोन है और आप अपने एक ऑफिस में बैठ के वहाँ पे जस्ट आप वो नंबर डायल करें, से इफ यू आर हैविंग अ टेलीफोन डायरेक्टरी, so cost is always same. So the cost of obtaining an observation is then the same in all three strata. The stratum standard deviation are again approximated. हम वही same value use कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले हम variances use करते थे, यहाँ पर हम standard deviation use कर रहे हैं, तो values पे कोई फर्क नहीं पड़ा। Earlier we were having यहाँ पे sigma 1 square and that was 25. Now this is sigma 1 which is the standard deviation that is approximately 5, and your sigma 2 is approximately 15 and sigma 3 is approximately 10. The firm decides to estimate the population mean mu with a bound on the error of estimation equal to 2 hours. So उन्होंने यहाँ पे जो bound है वो उन्होंने specify कर दिया। Find the appropriate sample size n, okay, and stratum sample size n1, n2 up till n3. So we will have to solve this example. Let us go through like this. We will use here well, okay, we will use equation 2.11 and 2.12 since the cost of collecting are the same in all strata, same in all strata, sorry, in all strata. Therefore, to find the allocation function, allocation fraction, so to find the allocation fraction, that is W1 W2 and W3, we have by using equation 2.11, then what is that? Sum I varies from 1 to 3 because L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है, Ni sigma I, so this is going to be N1 sigma 1 plus N2 sigma 2 plus N3 and sigma 3. So simply by putting the values, that is 155 into 5 plus 62 into 15 and plus 93 into 10, and if you solve it you will get 2635. So now by using (2.11), what we are having, that is N1 is equal to N, सेम हम यहाँ पे उसी की हम जो इक्वेशन नंबर 2.11 डिफाइन की थी हम उसी को यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज N1 sigma 1 डिवाइडेड सम ऑफ I varies from 1 to 3 Ni sigma I, so that is equal to N into 155 into 5 divided 2635, and that is equal to N into 0.30, and similarly अगर हम यहाँ पे फाइंड करें that is N, मैं इसका फार्मूला लिख देते हैं खैर है, sigma 2 divided sum I varies from 1 to 3 and this is Ni sigma I, this is equal to N
into 62 into 15 divided 2635, and if you solve it you will get n into 0.35, and यहाँ पे similarly n3 is going to be n into 0.35, right? So thus we because we were looking for, in fact we were looking for allocation fractions, so we got allocation fraction. Thus our allocation fractions are W1 is equal to 0.30, W2 is equal to 0.35, W3 is equal to 0.35. Now by using 2.12, now by using equation 2.12, what we can say to find n with the bound on error is equal to 2. So what we can have, that is 2 variance of y bar st is equal to 2, or variance of y bar st is equal to 1, and here we know that d is equal to b square, so this is b square by 4, and that is equal to 1, so we can say that n square d, that is going to be 3 1 square, because n की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 310 है, and d is equal to 1, and this is going to be 96, no, I think this is 96 100. So, and we know that sum of I varies from 1 to 3, and ni sigma I square is equal to 27125. ये हम इससे जो हमने पिछली एग्जांपल सॉल्व की हैं वहाँ पे हम इसको देख चुके हैं, राइट? सो लिख देते हैं, बल्कि यहाँ पे हम फ्रॉम एग्जाम्पल ये हमारे पास है. सो नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 2.2, by using equation 2.12 we have n is equal to, बल्कि हम इसकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2635 square I think, and this should be divided by n square d, that is 96 100, and plus sum of ni sigma I square, that is 27125, and when we solve it, that is going to be 56.34, or we can call it as a 57. So that is the full n. हमारे पास यहाँ पे इस पूरी स्टडी के अंदर जितना टोटल सैंपल साइज यूज होगा, that is 57. बट अब हमने ये देखना है, और हमने वो देखना भी with respect to these fractions है, right? ये this is important, right? So your n1 is going to be n W1, that is 57 into 0.30, and 2 and W2, and that is 57 into 0.35, and चूँकि आपके पास यहाँ पे जो थर्ड वेट है वो भी इनफैक्ट आपके पास यहाँ पे 0.35 ही है, so this is equal to n3. So your n1 is equal to 17, your n2 is equal to 20, and your n3 is equal to 20. The sample size is so far हमने यहाँ पे दो चीज़ें निकाली हैं. एक हमने यहाँ पे सैम्पल साइज निकाला टोटल इस पूरी स्टडी के लिए,
फिर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटम के अंदर वो सैंपल साइज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी. सो हियर इज द कंक्लूजन. वी ऑब्जर्व दैट इन दिस एग्जांपल 2.8 and last example 2.7, the sample size n is nearly the same but the allocation has changed. टोटल सैंपल साइज पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें जो डिफरेंट स्ट्रैटम में से सैंपल्स को पिक करना है बाय यूजिंग एनी ऑफ द टेक्निक, उनमें फर्क आ गया. सो more observations are taken from the rural area because these observations no longer have a higher cost. इससे पहले क्या था कि आपके रूरल एरिया में से कम जो थे वो जब सैंपल लिए गए थे, whereas in this case हमने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लिए रूरल एरिया में से, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट का इशू कोई नहीं है. आप यहाँ पे टेलीफोनिक सर्वे ही यूज कर रहे हैं, so your cost is same, so that makes no big difference, right? So here comes another example, that is example 2.9. An experimenter wanted to estimate the average weight of 90 rats, out of which 50 rats are male and 40 rats are female, being fed a certain diet. उनको एक खास डाइट दी गई थी. The rats were separated by sex. Hence, to use stratified random sampling with two strata seemed appropriate. Obvious सी बात यह है, हमने जिन रैट्स पे स्टडी करनी है, अगर हमने उनको मेल और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो फिर यहाँ पे नेचुरली दो ही स्ट्रेटा बनेंगे, एक मेल रैट्स के लिए, एक आपके पास फीमेल रैट्स के लिए. टू अप्रॉक्सीमेट द वेरिएबिलिटी विद इन ईच स्ट्रेटम, to approximate the variability within each stratum, the experimenter selected the smallest and the largest rat in each stratum and weighed them. Right? ये बात बड़ी important है. This is very important thing because हम इसी को use करेंगे. That is the smallest and the largest rat. Right? और अगर हमें याद हो तो शायद जब हमने range की बात की थी तो हमने शायद ये बोला था कि that is max minus min. Okay, perhaps there's a little problem with this, I think. So that is max minus min, right? She found that the range was 10 grams. जो अभी तक हमने पिछले 2-3 एग्जाम्पल से रेंज की बात करते आ रहे थे कि अगर हमने पॉपुलेशन वेरिएंसेस को अप्रोक्सीमेट करना है तो we can use range. Well, we would go for that now. Okay, 10 grams for the males and 8 grams for the females. So यहाँ पे उसने ranges भी बता दिए. How large a sample should have been taken in order to estimate the population average with a bound of 1 gram on the error of estimation. Assume the cost of sampling was the same for both strata, right? So हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें जो इसके अंदर आ रही हैं, I think we should highlight them. That एक चीज हमारे पास ये आ रही है, cost of the sampling was same. Okay, इसका मतलब ये है C1 is equal to C2 is equal to C3. Bound on error is your 1 gram and range is involved because that is the smallest. उसने क्या किया है, he has taken the smallest and the largest rat in each stratum और फिर उनका वेट कर लिया and then उसके बाद उसको पता चला कि वहाँ पे जो उसने मेल स्ट्रेटम में से किया था उसका वहाँ पे आंसर आया था रेंज 10 और जो फीमेल स्ट्रेटम में से किया था वहाँ पे आंसर आया था 8. सो ये दोनों फिगर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, राइट? और ऑब्वियसली साइजेस तो इंपॉर्टेंट हैं 50 and 40, whereas your total is 90. Okay, so here comes the solution. Let us, अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं. That is, let us denote males. So male is as stratum 1, whereas female as stratum 2. Now यहाँ पे हम इसके ऊपर यहाँ पे से कमेंट कर देते हैं. मुझे कुछ यहाँ पे कमेंट करने दें क्योंकि हमने यहाँ इक्वेशन यूज करनी है. Now to use equation 2.11, we must first approximate sigma 1 and sigma 2, right? The standard deviation
ये जो हमने आपसे लास्ट सेक्शन में भी ये बात बोली थी कि आप इसको देखें, आज अभी हम आपको इस सेशन में उसके बारे में बता रहे हैं. द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी 1/4 of the range, assuming that the weights have a bell-shaped यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, thus सिग्मा 1 कर लेते हैं इसको, आई नहीं कर, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 10/4 which is 2.5 and sigma 2 not स्केयर वेरिएंस से निकाल रहे, that is 8/4 क्योंकि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, that is 2.0. सो हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रेटा हैं, हमें उसके लिए दो ही वेरिएंसेस या से स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे चाहिए. सो नाउ यूजिंग, let me close these comments. Now using equation 2.11 we have n1 is equal to, ये भी हम इसको ऑलरेडी इससे पिछले एग्जांपल में यूज कर चुके हैं, that is ni sigma I, इसको आई थिंक जनरलाइज बना दिया जाए, that is sum over I varies from 1 to L ni sigma I, right? So now what is summation I varies from 1 to 2, this is ni sigma I which is equal to 50 into 2.5, 2.5 आपके पास यहाँ से आ रहा है and 2 आपके पास यहाँ से आ रहा है, plus 40 into 2.0, and if you solve it you will get the answer 20, right? So now thus n1 is equal to n1 sigma 1 divided sum I varies from 1 to 2 ni sigma I, right? So that is equal to n into 125 divided, I think this is 205, okay, this is 205 and this is equal to 0.61 n, and similarly n2 is equal to, अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे you will get 0.39 n, right? Now therefore our allocation fraction for this problem that is W1 and W2 are like this. W1 is equal to 0.61 whereas W2 is equal to 0.39, right? Now we have sum I varies from 1 to 2 कर लेते हैं, ni sigma I square, that is going to be 50 into 2.5 square plus 40 into 2.0 square, and if you solve it you will get 472.50, whereas your d is equal to b square by 4 because हम यहाँ पे म्यू के एस्टिमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं. So this is 1 square by 4 and that is 0.25. Now by using equation 2.12, I think, yes, we do have n is equal to sum of I varies from 1 to 2 and this is ni sigma I whole square
divided n square d plus sum I varies from 1 to 2 ni sigma I square, that is equal to 205 whole square divided 90 square into 0.25 plus 472.50, and this is going to be 16.83, right? So हमारे पास यहाँ पे एक टोटल जो है वो n हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ अब हमें ये देखना है कि हमें हर स्ट्रेटम में से कितना सैम्पल साइज पिक करना है. सो द सैम्पल साइज, इसको आई थिंक अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 17 कर दें तो ठीक है. द सैम्पल साइज शुड बी 17 एंड फॉर stratum 1 stratum 2, that is going to be n1 is equal to nw1. This is going to be 17 into 0.61, which is 10, and n2 is equal to nw2, that is 17 into 0.39, and that is 7, right? So अगर हम ये सैम्पल साइजेस लेंगे कि ओवरऑल अगर हम 17 का सैम्पल लेंगे और हमारा जो स्ट्रेटम 1 है वहाँ से 10 लेंगे और जो हमारा स्ट्रेटम 2 है वहाँ से 7 लेंगे. एक चीज़ और यहाँ पे जो गौर करने वाली है वो ज़रा देख लें कि देखिए यहाँ पे आपके पास जो मेल थे वो ज़्यादा थे और फीमेल जो थे वो कम थे, राइट? तो चूंकि यहाँ पे स्ट्रेटम का साइज बहुत ज़्यादा हम कहते हैं रोल प्ले कर रहा है और ये बता रहा है कि वहाँ से कितना सैम्पल साइज पिक करना चाहिए. तो देखिए हमने जो यहाँ पे फाइंड किया तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटम 1 में 10 और स्ट्रेटम 2 में से 7 का सैम्पल साइज जो है वो रेकमेंड और सजेस्ट हुआ है, ठीक? और ये बातें हमारे पास हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि साथ साथ हमारा क्रॉस चेक होता रहता है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, कहीं हमारे पास इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं निकल रही है. सो that is the clear indication that we are going on the right track. So now here we are having equality of the variances. Now this is another scenario. In addition to encountering equal cost, we sometimes encounter approximately equal variances, although के maybe हमें वो known हो या ना हो, but we can assume that. So sometimes जैसे हमने ये बोला कि कॉस्ट हमारे पास इक्वल आ रही है, तो हो सकता है कि हमारे पास इस तरह की भी रिस्ट्रिक्शन हो कि जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं उसमें हर एक स्ट्रेटम के अंदर जो वेरिएंसेस हैं अननोन भी हो सकते हैं लेकिन इक्वल हो सकते हैं और नोन होके भी इक्वल हो सकते हैं. सो अगर वो इक्वल हो जाएं तो इन दैट केस sigma i's cancel in equation 2.11 and that equation becomes here ni, I think I should write ni, that is equal to n into ni divided sum I varies from 1 to L and ni, and that is equal to n into ni divided n, because we know that कि आपके पास यहाँ पे जो सम I varies from 1 to L है ni, तो we know that कि इसको वैसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2.13, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी पता है कि n is basically n1 plus n2 plus nl. तो हम यहाँ पे उसी लॉजिक को यूज करते हुए हमने इस सम I varies from 1 to L over ni, that is basically n. So हमारे पास यहाँ पे एक और इक्वेशन भी ड्राइव की जा सकती है, दैट इज n इज इक्वल टू सम I वेरीज फ्रॉम 1 to L ni, सिर्फ n फाइंड करने के लिए, ये तो हमने ईच स्ट्रेटम के लिए फाइंड किया, दैट इज सिग्मा I स्क्वायर डिवाइडेड nd प्लस 1 ओवर n, सम i's वेरीज फ्रॉम 1 to L and ni, sorry not ni, this is going to be n sigma I square. So this equation can be called as 2.14, right? So by keeping this thing in mind, this method of assigning sample sizes to strata is called
is called the proportional allocation because sample sizes n1, n2, nl are proportional to stratum size n1, n2 up till nl. Of course, proportional allocation can be and often is used when stratum variances and costs are not equal. One advantage to using this allocation is that the estimator y bar st becomes simply the sample mean for the entire sample. This feature can be an important time-saving feature in some surveys. हमारे पास बाज़ जगहों पे ये भी होता है, right? So, under proportional allocation, 2.8 for the value of n, which yields variance of y bar st d becomes basically ये equation मैंने पहले ही लिख दी थी, ये equation जहाँ पे आनी चाहिए थी. So that equation becomes here n is equal to sum I varies from 1 to L. So ni sigma I square and divided n d plus 1 over n sum over I varies from 1 to L n sigma I square, and now this equation is basically your equation number 2.14, right? Let's have a look on the example in which यही phenomenon जिसको अभी हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं, that is in the picture. The advertising firm in example 2.2 thinks that the approximate variances used in previous example are in error and that the stratum variances are approximately equal. तो सेम वही डेटा जो कि हमने इससे पिछली एग्जांपल में यूज़ किया, बेसिकली इसका रेफरेंस बार बार देने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि हम बात चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट चूज़ कर लेंगे, उनको डायरेक्ट निकाल देंगे. अदरवाइज अगर हम ऐसा ना करें तो हमें वो सारी की सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ती हैं. रन टाइम पे तो ऑब्वियसली हम नहीं कर रहे, हमने वो कैलकुलेशन अपने पास यहाँ पे वो टोटल सम्स एंड स्केल्स को निकाल के रखा हुआ है. So the common value of sigma I was approximated by 10 in the basic study, right? जो हमारे पास वहाँ पे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी वहाँ पे स्टडी हुई थी, उसके अंदर वो जो कॉमन वैल्यू थी, बिकॉज उसने कह दिया कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, तो अगर इक्वल हैं तो एक कॉमन वैल्यू तो कोई होगी. सो वो कहता है दैट कॉमन वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय 10 इन ये वैल्यू वो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल स्टडीज जो की गई उसके हिसाब से बता रहा है. सो टेलीफोन इंटरव्यूज आर टू बी यूज्ड. इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेलीफोन इंटरव्यूज यूज हो रहे हैं तो पूरे शहर में एक कॉल करने के जो चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं हमेशा. सो वी कैन कंक्लूड दैट कॉस्ट विल बी इक्वल इन ऑल स्ट्रेटा. 10. द फर्म डिजायर्ड टू एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स per week that household in the county watch television with the bound on the error of estimation equal to 2 hours. Okay, bound भी उसने यहाँ पे define और specify कर दिया. Find the sample size and stratum sample sizes and necessary to achieve this accuracy. Accuracy हमारे पास क्या है, basically हमारे पास जो accuracy का level है, that accuracy level is here. Okay, that your bound on the error of estimation should be equal to or less than basically 2 hours होना चाहिए. So let's have a look on the equation. हमारे पास यहाँ पे पहले हम कुछ चीजें निकाल लेते हैं. So we have sum I varies from 1 to 3 ni sigma I square that is equal to n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus चूँकि 3 स्ट्रेटा हमारे पास हैं, so n3 यहाँ पे sigma 3 square, whereas अगर हम इसमें values put कर दें so we can have that is 155 multiply 100. देख लें हमने इससे पिछली एग्जांपल के अंदर जो यूज़ किए थे वो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ किए थे. यहाँ पर we are talking about variances and this is 62 multiply 100, right, and plus 93 into 100. तो ये 100 बेसिकली क्यों हुए हैं, वी हैव टू लुक बैक. उसने ये बोला है दैट इज अ कॉमन वैल्यू ऑफ द सिग्मा आई वाज अप्रोक्सीमेटेड बाय 10, सो सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, राइट. तो हम उसी 100 को यहाँ पे यूज करते जा रहे हैं. सो दैट वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू 31,000, राइट. नाउ दस सिंस हमें ये भी पता है d is equal to 1, so your equation 2.14 gives
n is equal to 31,000 divided 310 into 1, that is d n d, and plus 1 by n into sum of ni sigma I square, that is okay. So हमने सिंपली उस फार्मूले के अंदर, कौन से फार्मूले के अंदर, 2.14 अभी हमने डिफाइन की है, हम इस फार्मूले के अंदर डायरेक्ट अपनी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, राइट. सो दिस थिंग विल बिकम एज अ 75.6 और we can approximate it as a 76. Therefore, n1 is equal to n into, चूंकि आपके पास यहाँ पे कॉस्ट भी सेम है और आपके वेरिएंसेस भी सेम है, so that is going to be summation I varies from 1 to 3 ni, and that is basically is equal to n into n1 divided capital N, and that is equal to n into 155 divided 310, capital N आपको पता है 3 है, sorry, that is 310, this is equal to n into 0.5. So अब हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकाल ली है, that is equal to, basically हम इस n की जगह पे जब यहाँ पे 76 की जगह पे ये पुट करेंगे, that is going to be 38. So what we can say further, that your n2, that is equal to n into n2 by n. अब हम यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर रहे हैं, that is going to be n into 0.2. तो चूंकि n हमारे पास 176 आई थिंक आ चुका था, 176 था, नो 76, so n हमारे पास 76 मौजूद है, so 76 into 0.2, that is going to be 15. And similarly your n3 is equal to n into n3 by capital N, that is equal to n into 93 by 310, that is equal to n into 0.3, so that becomes 76 into 0.3, and that becomes 23, right? So the results differ from these of example 2.8, because here variances are assumed to be equal in all strata and are approximated by a common value. So हम अपने आज के सेशन को इसी एक एग्जाम्पल के साथ ही कंक्लूड करेंगे. There are some like something to like we have to put little emphasis on this, that the amount of money to be spent on the sampling is sometime fixed before experiment is okay. Leave it. हम इसको next इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे, because that is a new thing, and मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपनी एंड स्लाइड जो है वो अगले लेक्चर के स्टार्ट पे लेके चला जाऊँ, राइट. सो फार आज का सेशन जो था हमारा, दैट वाज अगेन, इसमें कुछ ज़्यादा हमने चीज़ों को थ्योरेटिकल बेसिस पे तो नहीं देखा, रादर we try to understand in fact things with respect to new approach, that is a Neyman's allocation. और आज के लेक्चर का स्टार्ट भी हमने यहीं से किया था, and what we said that in some stratified random sampling problems the cost of obtaining an observation is the same for all strata. Maybe उस स्टेज पे आपको ये बात समझ ना आई हो कि कॉस्ट कैसे बराबर हो सकती है, बट ऑन द लेटेस्ट स्टेजेस जब हमने ये बात की कि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि पूरी सिटी के अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे वो हम वाया फोन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है. और उसके पीछे एक हमने एजम्पशन भी रखी उस एक एग्जाम्पल के अंदर, हम ये अज्यूम करते हैं कि उस काउंटी के अंदर जितने भी घर हैं
उसे कस्बे के अंदर जितने भी घर हैं उन सब घरों में फोन एटलीस्ट वहां पे जरूर मौजूद है. सो इफ कॉस्ट आर अननोन, एक और भी सिचुएशन है, या तो हमें ये पता हो कि कॉस्ट हमारे पास सेम आएगी, और अगर कॉस्ट हमारे पास अननोन है तो इन दैट सिचुएशन एज वेल हम वहां पे कॉस्ट को सेम एज्यूम करते हैं. तो जब कॉस्ट को सेम एज्यूम किया जाएगा तो हमने जो इससे पहले अपना फॉर्मूला डिफाइन किया था उसमें से वो जो कॉस्ट की टर्म है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, एंड सो वी विल बी हैविंग एन आई इज इक्वल टू एन इंटू एन आई सिग्मा आई डिवाइडेड सम आई वेज फ्रॉम 1 to n i into sigma I. So this method of selecting n1, n2, nl is called the Neyman's allocation. Under this allocation, equation 2.10 for the total sample size n becomes, तो obvious सी बात है जब हमारे पास यहाँ पे हमने कॉस्ट को सेम कर दिया तो हमारे पास जो नई इससे पहले जो हमने इक्वेशन देखी थी दैट वाज 2.10, दैट इक्वेशन विल बिकम इन द शेप ऑफ 2.12. देन वी ट्राई टू वैल्यूएट द एग्जाम्पल. बस इस एग्जाम्पल में मैंने आपको एक बात बड़ी एक्सप्लिसिटली बताई थी कि ये वही सेम डेटा है, लेकिन इससे पहले हम वहाँ पे सिग्मा 1 स्केयर, सिग्मा 2 स्केयर एंड सिग्मा 3 स्केयर ले रहे थे, बट इन दिस केस हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरिएंसेस वैल्यूज वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यूज, राइट. वी ट्राई टू सॉल्व. सबसे पहले काम हमने क्या किया कि हमने अपना यहाँ पे हमने वो फ्रैक्शंस फाइंड कर ली जो हमारे पास एलोकेशन फ्रैक्शन थी फॉर ईच स्ट्रैटम, क्योंकि अगर वो फ्रैक्शन मुझे मिल जाए और फिर मैं एन भी निकाल लेता हूं उससे मैं इजीली डिसाइड कर लूंगा कि कौन से स्ट्रैटम के मेरे पास जो है सैंपल जो है वो वहां पे कितना होना चाहिए. सो सबसे पहले मैंने वो वाले फ्रैक्शंस फाइंड किए यहाँ पे, राइट. ये 3 फ्रैक्शन मैंने फाइंड किए. उसके बाद आई स्विच्ड एंड आई वेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, राइट. तो फिर मैंने एन की वैल्यू फाइंड की, दैट वाज 57, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एन, बेसिकली ये जो n की वैल्यू आ रही है आपके पूरे के पूरे जो आपकी स्टडी है, आप उसमें अगर n 57 यूज करोगे अंडर दिस कि आप अपने पहले स्ट्रैटम से जो यहाँ पे सैंपल पिक कर रहे हैं वो 17 होना चाहिए, दूसरे स्ट्रैटम से आप सैंपल साइज 20 पिक करोगे और तीसरे स्ट्रैटम से भी आप सैंपल साइज 20 ही पिक करोगे, तो फिर आपका वो जो हम कहते हैं बाउंड ऑन द एरर था, ठीक है, एरर ऑफ एस्टिमेशन, दैट विल बी लेस देन 2 होगा, राइट. तो ये हम यहाँ पे इसको श्योर करवाना चाह रहे थे, तो उसकी श्योरिटी के लिए वी हैव टू यूज दीज सैंपल साइजेस. सो हमने यहाँ पे ये भी देखा कि इससे पहले हमने एग्जांपल 2.7 सॉल्व की थी. आई थिंक दिस वाज एग्जांपल 2.8, यस. इससे पहले हमने एग्जांपल 2.7 सॉल्व की थी, तो उसके अंदर भी और इसके अंदर भी हमने देखा कि n इज नियरली इक्वल, राइट, बट द एलोकेशन इज चेंज्ड. More observations are taken from the rural area because these observations no longer have the higher cost. वहां पर क्या था, हमारे पास जो थी वो कॉस्ट हायर थी, यहाँ पे हमने कॉस्ट को इक्वल एज्यूम कर लिया, तो आपके पास उस एरिया का भी रेशियो ज्यादा हो गया जिस एरिया का रेशियो इससे पिछली एग्जांपल हमारे पास वहां पे कम निकला था. फिर हमने एक और एग्जांपल स्टडी की जहां पे हमने बात की थी नेचुरल स्ट्रैटिफिकेशन की. तो कुछ जगहों पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट वी आर हैविंग अ नेचुरल स्ट्रैटिफिकेशन, लाइक इन दिस केस हमारे पास 2 ग्रुप्स ऑफ रैट्स हैं, टोटल 90 रैट्स थे, हमने 2 ग्रुप्स उनके डिजाइन कर लिए. एक ग्रुप का साइज 50 था और एक ग्रुप का साइज यहाँ पे 40 था. वी सॉल्व्ड इट बाय यूजिंग अ रेंज मेथड, क्योंकि हमने पॉपुलेशन वेरिएंसेस को अप्रॉक्सीमेट करना था. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज्ड रेंज. लेकिन इसमें एक चीज और भी जो देखने वाली थी कि जैसा कि एक्चुअल पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास ये था कि ज्यादा चूंकि वहां पे मेल रैट्स थे और कम हमारे पास वहां पे फीमेल रैट्स थे, तो इसी तरीके से वो जो सैंपल साइज आना चाहिए था एट द एंड ऑफ द डे वो भी इसी तरीके से आना चाहिए था. सो वी कैन सी दैट कि जब हमने इसको निकाला तो हमारे पास यहाँ पे सैंपल साइजेस क्या है कि आपको जो मेल स्ट्रैटा था उसकी जो अंदर से जो सैंपल साइज आया दैट वाज 10, और जो फीमेल स्ट्रैटम था उसके अंदर से सैंपल साइज हमारे पास आया 7. देन हमने एक और अप्रोच को डिस्कस करने की कोशिश की कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वहां पे जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल हो जाएं. तो जब वेरिएंसेस आपके इक्वल हो जाते हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारी जो इक्वेशन नंबर 2.11 थी फॉर द सैंपल साइजेस दैट बिकम्स अ न्यू इक्वेशन, राइट. सो लाइक दिस, राइट. अभी हम इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए मैं यहां लिख देता हूं कि एज्यूम कर लें, एज्यूम टू बी डिस्कार्डेड. देन हमने कहा कि अंडर द प्रोपोर्शनल एलोकेशन 2.8 फॉर द वैल्यू ऑफ n which yields variance of y bar st is equal to d, that becomes a new equation which is 2.14.
Then we had examples on that. We tried to solve the example and then we have suggested that हमारे पास इनफैक्ट हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखी, हमने सबसे पहले वो वाले फ्रैक्शन निकाले. तो वी आर हैविंग दोज फ्रैक्शंस हियर, राइट, एंड देन ऑन द बेसिस of the fractions we have taken out the sample. So the results differ from those of example 2.8 because here variances are equal, assumed to be equal in all strata and are approximated by common value. अगर ये common value से approximate ना किए जाते तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये values नहीं आ सकती थी because बहरहाल हमें यहाँ variances की ज़रूरत होती है. So इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं and then we will come up with some new dimension of stratification. और अभी तक हमारे पास जो एक्सटेंसिव काम है वो सैम्पल साइज एस्टिमेशन के ऊपर ही हो रहा है. तो बेसिकली हमने एक दफ़ा पहले भी ये बात बोली थी कि सैम्पलिंग का एक सबसे कोर ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है हमें कितना सैम्पल यहाँ पे लेना चाहिए कि हमारा जो एरर है वो इस एक ख़ास लेवल बी तक बाउंड होकर रह जाए, उससे ऊपर ना जाए, उससे नीचे रहे. सो आई होप आफ्टर हैविंग दीज एग्जाम्पल्स यू विल बी हैविंग वेरी फेयर आइडिया. सो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. सो तब तक अल्लाह आपका हामी और नासिर हो.